Hey guys, this is Nimrit Kaur Ahluwalia and you're watching me on E-Times. But more than the kilos, pata hai, I realized that we are so fixated on the kilo aspect of it. I think it has a lot to do with not the weighing scale number, but more about like losing your fat percentage and gaining muscle. So that's precisely what I did. I will be nice to you, you be nice to me. But if you think you're going to, walk over me, that's not going to happen anymore. I'm not going to be naive enough to sit and take anybody's BS. Let's just say that. Dad was very excited, because Fauji dad started giving me tips instantly. ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये इसकी technique है. I was like, okay, let me register. So he was very happy. Mom was also like, everyone has been very supportive and they're excited to see this. इस show का format is also very positive in that sense. You always see a lot of camaraderie between contestants. सब लोग एक दूसरे को motivate कर रहे होते हैं, cheer कर रहे होते हैं. So I think that energy will perhaps like push me to like overcome that little hitch that I have. Hello everyone, welcome to E-Times. I'm Vijaya Tiwari and look who's with me. She's none other than Nimrit Kaur Ahluwalia. Nimrit, back. You're back and I'm so happy to meet you after so long. You know how excited I was. Yeah. And guys, she's all set for Khatron Ke Khiladi 14 this time. So Nimrit, excited? Nervous? What's the feeling? Very, very excited. Looking forward to it. I think it's going to be a lot of fun, right? I hope so. Yeah. और preparations कैसे चल रही है? इस शो के लिए तो जितना prepare करो उतना कम है because you know what. मतलब पता नहीं होता कि वहाँ पे क्या चीज़ होने वाली है. But body के लिए अगर physical strength की बात करें, what are the preparations that you're doing? Vijay, I honestly feel like the entire show is a lot to do with mental strength more than physical strength for sure. अगर देखें inherently like men are stronger physically to women, but that doesn't mean that women can't win. Yeah. We have had 4 girl winners and I hope that this year it's a girl who takes away the trophy. But I'm just saying in terms of prep, like you said, कितना ही prepare कर सकते हैं. I think gym हर कोई जा रहा है, CrossFit, MMA, everybody is trying different forms of workout for sure. But like I said, mental game, so I think just to meditate, just to be centered from within, that's more important. Yeah, and we can see that you have worked a lot on yourself because weight loss काफी लग रहा है. मतलब the last time I met you personally, उससे अब तक मैं देख रही हूँ बहुत फर्क पड़ा है. कितने किलोस कम कर लिए? Many. Numbers? But more than the kilos, pata hai, I realized that we are so fixated on the kilo aspect of it. I think it has a lot to do with not the weighing scale number, but more about like losing your fat percentage and gaining muscle. So that's precisely what I did. But Vijaya, I feel like मैं अंदर से भी बहुत बदली हूँ पिछले 1 साल में, तो शायद वो एनर्जी भी यूज आउट हो रही है. It's not just outside, but internally also. Internally क्या क्या चेंज हुआ है निमृत में? बिकॉज बिग बॉस की एक जर्नी ऐसी रही है और उसके बाद की भी आपकी जर्नी ऐसी रही है कि आपने बहुत कुछ देखा है उस जर्नी में, और बाहर आने के बाद भी आपने बहुत कुछ देखा है, जिसकी वजह से आई एम वेरी श्योर कि आप में वो स्ट्रेंथ आ गया है दैट यू कैन डील विथ मैनी थिंग्स, जो शायद पहले निमृत थोड़ा इमोशनल हो जाती थी. अब वो बैलेंस कर सकती है चीज़ें. डू यू एग्री? एब्सोल्युटली. आई फील लाइक स्ट्रेंथ तो पहले भी थी, क्योंकि अगर नहीं होती तो उस घर में, especially at that point when I was not mentally at a great space or a great mind, state of mind, अगर मेरे में नहीं होती स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ हमेशा से थी. बट येस, जिसे कहते हैं ना, शायद एक्सपीरियंस के साथ आप और मेच्योर होते हो, वक्त के साथ आप और सेंटर्ड लाइन हो जाते हो. आई थिंक पिछले 1 साल में मैं काफ़ी स्पिरिचुअली भी, I have gone on that path too. I think I've become even more patient, and I've also realized that I'm not going to let anybody take me for a ride anymore. I'm done being nice in terms of I will be nice to you, you be nice to me, but if you think you're going to walk over me, that's not going to happen anymore. I'm not going to be naive enough to sit and take anybody's BS. Let's just say that. Right. Also with Khatron Ke Khiladi, you are going to work closely with
रोहित शेट्टी, Yeah. जैसे वो सब जानते हैं कि वो एक्शन के करता धरता है Yeah, बॉलीवुड बिल्कुल, में, बिल्कुल। राइट। और वो अपने लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं, वो जिस तरीके से मोटिवेट करते हैं अपने कंटेस्टेंट को कि कोई नहीं भी करने वाला रहेगा तो वो सिर्फ बातें सुनकर वो कर लेगा स्टैंड, Correct, correct. राइट। तो हाउ एक्साइटेड आर यू टू वर्क क्लोजली विथ हिम, फर्स्ट सलमान खान एंड नाउ रोहित शेट्टी? Very excited because firstly, I mean, the kind of impact that he's left on the Indian cinema, I mean, it's commendable. The fact that his journey in itself is so inspiring, right? From where he started, from what his family situation was like, to where he's reached, to the kind of name he's built for himself. And that one, you know, you can only see that there has been a constant growth and being consistently hardworking. Yeah. Right? Success and failure it's not never in our hands. Yeah. So I just feel excited that to be in such a person's presence can be a very learning experience. So I only have gain from that experience, and I look forward to that. What was your family's reaction when you went ahead and said yes to the show? You know, Vijaya, unlike last time, like when I did my previous reality show, I was, even till the last day, I was like, I don't want to do it, or maybe, you know, this is not my cup of tea. And it was my parents who were like, no, you should. And everybody around me, not just them, but like my friends, everyone, my managers at that time, everybody felt that I should do that. But इस बारी एकदम ऐसे था कि I didn't need to ask anyone. I wanted to do this, you know, and I've realized in the past also that when I go with my gut and my instinct, I feel a lot more confident of the decision that I've made, irrespective of how it pans out. You know, then there is no like, oh, आपने बोला था, or you know, इसमें whatever. So dad was very excited, you know, because Fauji dad started giving me tips instantly. ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ये इसकी technique है. I was like, okay, let me register. So he was very happy. Mom was also like, everyone has been very supportive, and they're excited to see this side of me, you know, and for me to explore this. Yeah. But any phobias, fears in mind, या आपको लगता है कि I've always had heights का phobia. Oh, really? Yeah, like I remember I was tiny, और हम लोग स्विमिंग करने के लिए टेलीकैन जाते थे, एंड यू नो द डीप एंड यूज्ड टू बी सम 15 feet something, and then the diving instructor would say कि चलो ऊपर से छलांग मारो. I just stand there frozen, and then sometimes you would have to come push me so that I actually come down. Oh. So height वो का है थोड़ा सा, हाँ. दिमाग में अभी भी. I mean considering, हाँ है. बट अब वहाँ जाओगे तो कॉन्कर तो करना पड़ेगा. आई थिंक सो. आई थिंक 2-3 बार ही करेंगे, मे बी फर्स्ट टाइम नहीं होगा या सेकंड टाइम नहीं होगा, बट आई जस्ट फील कि सर भी इतना मोटिवेट करेंगे, आप आसपास भी देखेंगे व्हेन एवरीबडी इज, यू नो, लाइक चेयरिंग, बिकॉज आई थिंक इस शो का फॉर्मेट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव इन दैट सेंस. यू ऑलवेज सी अ लॉट ऑफ कमराडरी बिटवीन कंटेस्टेंट्स. सब लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे होते हैं, चेयर कर रहे होते हैं. सो आई थिंक दैट एनर्जी विल परहैप्स लाइक पुश मी टू लाइक ओवरकम that little hitch that I have in mind. And इस बार का लॉट जो है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है ना, काफ़ी एंड काफ़ी यू नो कंटेस्टेंट्स जो है वो ऐसे लग रहा है कि आगे जाकर यू नो बहुत अच्छे परफॉर्मर्स होने वाले हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं. टेलीविजन के तो काफ़ी नोन नेम्स हैं ही, बट हैव यू इंटरेक्टेड विद देम? क्या लग रहा है कि कौन थोड़ा टफ कॉम्पिटिशन दे सकता है? मैं सच कहूँ, मेरी ना अभी कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन हुई नहीं है. एक मीटिंग थी जिसमें सब आए थे, पर मैं नहीं थी. आई वाज विजिटिंग गोल्डन टेम्पल दैट टाइम, सो आई मिस दैट. बट विजय, फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट हु इज माई कॉम्पिटिशन. आई रियली जस्ट वांट टू कम्पीट विद माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ हैव अ हॉर्स पेशेंट, एंड यू नो जस्ट बी कि यार अगर मैंने आज इतना किया है तो मुझे कल इतना करना है, एंड आई जस्ट वांट टू बी बेटर एट व्हाट आई एम डूइंग. And trust me, in the last 1 year, I've realized it's all about being consistent in life. Whether it's your mindset, whether it's working on your body, whether it is constantly having the strength to be patient, to be open to rejection. It just needs to, you need to consistently be at it. You know, in Punjabi, you know, sabar, shukr, simran. Sabar is something that I've learned so well in the last 1 year. In fact, I was even thinking I should get a tattoo or something like that. Oh. Yeah, that's how much I have understood the Importance. real meaning of it. हाँ. क्योंकि बोलने में तो बोलते ना, अरे just be patient. Yeah. But उसका essence अपनी लाइफ में उसमें ढल जाना इज हार्डर. और वो सबर हमको दिखा भी है, क्योंकि यू हैव जस्ट नॉट यू नो आफ्टर बिग बॉस आपको इतना काम आता है, बट हमने देखा है कि यू हैव बीन वेरी सिलेक्टिव विद प्रोजेक्ट्स, और आपने जहाँ पर भी हाथ डाला है, टच वुड, यू हैव
फाउंड सक्सेस, चाहे वो गानों की बात कर लें, आपने जितने भी म्यूजिक एल्बम किए वो चार्ट बस्टर्स रहे हैं और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, प्यार दिया है, एंड नाउ यू आर मूविंग वन स्टेप अहेड विद खतरों के खिलाड़ी शो. बट व्हाट एल्स, व्हाट हैज हैपेंड इन 1 year, बिकॉज आप एक बहुत न्यूज़ थी जब आपने एक प्रोजेक्ट बैक कर लिया था, बट बाहर आने के बाद आपने वो डिसीजन लिया कि आप वो नहीं करना चाहते. सो व्हाट एल्स इज हैपनिंग? What else is, the first thing I did after Big Boss was I went for an acting workshop. I started to work on myself. मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि मैं यहाँ सेलिब्रिटी बनने नहीं आई हूँ. मैं एक एक्टर हूँ. मैं एक अच्छे एक्टर्स के I want to be known as a good actor. I want to leave a good body of work behind. I'm ready to work for it. I'm ready to give multiple auditions. I'm ready to work on myself where I need to. And I've been doing precisely that. And hopefully by the end of the year, you will hear something very good. Wow. So I'm very excited and I'm looking forward to it. I wish I could say more. Yes. Before wrapping up, I also want to know कि मंडली के members ने किया है खतरों का खिलाड़ी, तो किसी से बात हुई कुछ, and how excited are they? Everyone's just been so supportive, so happy that I chose to do this, and of course सबने बस एक advice जो सबने दिया वो यही है कि just enjoy. And I'm like, Europe है, of course I'll enjoy. So just going with that. शिव से कुछ पूछा कि तूने कैसे किया, तू बता मुझे, या फिर उसने भी यही कहा कि just go ahead and do it? He's like, because उसका भी यही कहना था, like in the sense like it's not like you can preempt, like उसके लिए जो experience रहा हो necessarily मेरे लिए नहीं हो सकता है, right? So देखते हैं क्या होता है. Also, Abdu is getting married. वो कितना बड़ा सरप्राइज था? सब ऐसा कुछ शॉकर नहीं था, थोड़े बहुत फीलर्स पता चल गए थे, बट आई एम जस्ट वेरी हैप्पी फॉर हिम यार. इट्स लाइक सच अ न्यू बिगनिंग टू हिज एंटायर लाइफ. I wish him all the love, all the luck, all the companionship, and just so happy for him. I think everybody deserves to have a partner for a lifetime, and I'm very happy he's getting into that stage of life. Yeah, and he always wanted to get married. Yeah, वो joke भी करते थे. Yeah, he always wanted to get married at this age, and it's great that it's coming true. Yeah. And वो लेकिन पहले लगा था कि क्या prank है, क्या है? नहीं, prank तो बिल्कुल भी नहीं लगा था. We all knew it was legit. It was legit. साजिद और मंडली से आपकी मुलाकात होती रहती है, तो उनका क्या रिएक्शन था जब उन्होंने कहा? Everybody was like, of course you should do it, and very happy, very positive response from everyone. Any message to fans who will be watching you after a gap on small screen? Yeah, I just want to say, guys, thank you firstly so much for always being so supportive of the decisions that I've made, of the choices I've made, for being patient and keeping the sabr intact. And I promise to make you guys proud, and I'll do my best, and I hope you guys have a great time watching me on the small screen. थैंक यू सो मच निमृत, एज ऑलवेज आपने बहुत दिल खुश कर दिया अपनी बातों से, और आपको मिलके भी बहुत अच्छा लगा. खतरों के खिलाड़ी 14 के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं. ऑल द बेस्ट टू यू, एंड नाम रोशन करके आना. यस, थैंक यू सो मच. थैंक यू.